and to engage in the devotional service of the Lord and to eat the remnants of foodstuff offered to the deity. One who is directly engaged in all these devotional activities is to be understood as having studied all Vedic literature. He has come to the conclusion perfectly. Of course, for the ordinary person who are not in Krishna consciousness or who are not engaged in devotional service, what is to be done and what is not to be done must be decided by the injunctions of the Vedas. One should act accordingly without argument. That is called following the principles of Shastra or scripture. Shastra is without the four principal defects that are visible in the conditioned soul. These four defects are imperfect senses, the propensity for cheating, certainty of committing mistakes, and certainty of being illuminized. These four principal defects in conditioned life disqualify one from putting forth rules and regulations. Therefore, the rules and regulations as described in the Shastras, being above these defects, are accepted without alteration by all great saints, acharyas and great souls. In India, there are many parties of spiritual understanding, generally classified as two, the impersonalist and the personalist. Both of them, however, lead their lives according to the principles of the Vedas. Without following the principles of the scriptures, one cannot elevate himself to the perfectional stage. One who actually therefore understands the purport of the Shastras is considered fortunate. In human society, aversion to the principles of understanding the Supreme Personality of Godhead is the cause of all fall down. That is the greatest offense of human life. Therefore, Maya, the material energy of the Supreme Personality of Godhead, is always giving us troubles in the shape of the threefold miseries. This material energy is constituted of the three modes of material nature. One has to raise himself at least to the mode of goodness before the path of understanding the Supreme Lord can be opened. Without raising oneself to the standard of the mode of goodness, one remains in ignorance and passion, which are the cause of demonic life. Those in the mode of passion and ignorance deride the scriptures, deride the holy man, and deride the proper understanding of the Supreme Personality of Godhead. They disobey the instructions of the spiritual master, and they do not care for the regulations of the scriptures. In spite of hearing the glories of devotional service, they are not attracted. Thus, they manufacture their own way of elevation. These are some of the defects of human society which lead to the demonic status of life. If, however, one is able to be guided by a proper and bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the higher stage, then one's life becomes successful. Thus ends the Bhaktivedanta purports, the 16th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of the divine and demonic nature. So this is the last verse of this chapter. That's why Prabhupada says, thus ends the purport of this chapter. Hare Krishna. Hare Krishna. So I hope you all are doing good. Yes. I had a very good yatra to Ayodhya and How was the experience? very elevating, especially darshan of Ram Lalla. Yes. So you all are invited to join me. I may plan for a yatra, another yatra, maybe in the June or July. Let's see. So first I went to Vrindavan, then from there to Ayodhya, then from there to Prayagraj, and then from Prayagraj. In between I went to Panipat from Delhi. So from there I got this happening. So I went to London. Yeah. So a very nice Punjabi family who owns one unit of harmonium manufacturing factory. So I went there and I had a good time with them. So from there I got this. Yeah. कुरुक्षेत्र नहीं गया मैं क्योंकि यात्रा बहुत लंबा हो गया था ऑलरेडी. Saturday morning I came. Saturday evening. So it was a very
वंडरफुल यात्रा. सो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि गीता स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. कुछ लोग कह रहे हैं भजन. Of course, we will have bhajans also, kirtans. तो बेसिकली जो मैंने आपको पैम्पलेट दिया था पहले 6 सेशंस, 6 things we are going to discuss about. 3 sessions so of 6 things are discussed. So I think we have covered just one. Search for happiness, right? We covered all 5 sutras. Yeah, these are just sutras in one chapter. of one session. One session. Right, so we can directly go to the Gita also, but if you can follow the pattern as given earlier, then it will be very good later, because these are the basic founding principles which we are discussing right now. It's just like ABCD. Of course, you all know Bhagavad Gita. But still, because it's a process and it's a step-by-step process, so I would like to stick to that, and you will learn, many things in this. It's not that it's a basic elementary course, so इसमें नया क्या है? There are many things to learn. So I think last time we discussed about how to search for the happiness, right? You remember any points? Yes, the last 3 sutras you taught us about. Which 3 sutras? Do not compare yourself with others. Yes. And then? जो है उसको एक्सेप्ट करो. लो एक्सपेक्टेशन. That's the Yes. first one. Have a life with a purpose. Have a life with purpose. Yeah. By the way, where are your other members? Someone is They say हमारे Then again. Okay. So then is Yeah, no problem. the last one is connect you with the Supreme Lord, Personality of Godhead. Yeah. आपको कुछ याद है? नहीं याद तो कोई बात नहीं. इतना तो याद है कि मंडे को प्रोग्राम है. Right? Yeah, our first was correct your equation for happiness, right? The first one, and then second one, Change your change your expectations, correct? Third one, Third one is don't expect. Once again, Don't don't compare yourself with don't others. compare. 3 हो गए. Don't compare. लगता है बाकी लोगों ने कंपेयर कर लिया. अच्छा नहीं आएगा. खीर लेके आने वाला कौन था वो? नहीं आए. अरे उनको बोलो कम से कम खीर भेज दो. और नहीं आए तो भी चलेगा. मीनाक्षी माता जी, right? No, Kajal. नहीं. Meenakshi. Meenakshi Rao, right? Yes. She is Maharashtrian or what? I think so, yeah. I'm not sure. Huh? South Indian. Okay, South Indian. Okay, fine. तो उनको बोल देना, मैसेज दिया मैंने. बोला है तो आ जाएगी. Okay. Anyways, We'll say that. they will come. The key has. Okay, has already come. क्या करें? This is IST, Indian Standard Time. So Indian Standard Time is a time. Yeah. Then the fourth one was have life with purpose. And finally, Connect with the Supreme yes, Lord. source, supreme source. Essence of all this discussion was to realize that we need some guidance in life somewhere, because the first point was correct your equation, right? वहाँ से शुरुआत जब होती है तो इक्वेशन करेक्ट करने के बाद ये सब सबसेक्वेंट पॉइंट आएंगे, बट द मेन important point is to correct our equation of life. So based on that, we will go to the second topic that was listed in your
course that is manual for life, right? क्योंकि अभी इक्वेशन करेक्ट करना है तो इक्वेशन कैसे करेक्ट करें, फिर सही इक्वेशन कहाँ लिखा हुआ है तो पता करना पड़ेगा ना। अगर हमारे जीवन का इक्वेशन गलत है तो सही इक्वेशन कहीं तो लिखा होगा, तो कहाँ पे लिखा है वो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर अभी पता करना पड़ेगा कि उसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप सबके लिए क्वेश्चन, मैनुअल का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल? गाइडेंस। गाइडेंस बोलिए, आप लोग बोलते हैं रैंडमली जो आएगा। Okay, set of rules to follow. For? Okay. Road map. Okay. Google Maps लगाया होगा आपने? Google Map क्यों लगाते हैं? Because you don't know. Future destination. भटक ना जाए इसलिए। सब लोग बेचारे जिंदगी में भटके हुए हैं, राइट। कभी कभी सही रास्ते पे चलने के बाद भी कुछ साल बाद पता चलता है कि ये रास्ता सही नहीं था, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। So yes, manual is required, and this is the verse that we read from Bhagavad Gita today, 16:24, where Krishna says that if we have to become successful in life, then we have to follow the scriptures, standard scriptures. They are called as law books. जैसे a government is running country, right? So government has a particular law book. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Constitution. अब उसके अंदर फिर अलग अलग sections हैं, right? For different things. So that's the foundation. Without that, your country cannot function properly, because you need some basic guidelines on how should the citizen conduct their life, how different sections of the a particular department should operate. अब तो businessman है, आपको पता है, right? अब एक घर छोटा सा है तो घर में भी आपका एक मैनुअल रहता है, to which both of you agree, ये मैनुअल ऐसे होना चाहिए, right? That's called agreement. जैसे कोई रेंट लेता है घर पे तो भी एग्रीमेंट होता है कि ये ऐसा है, आपको इतना ही इतने मंथ के इस टाइम में बिल भरना है, रेंट भरना है, एंड सो फोर्थ। सोसाइटी के रूल्स रहते हैं, these are all instruction manuals. So Krishna says in Bhagavad Gita that one should conduct his life as per scripture. उसको संस्कृत में कहते हैं शास्त्र। शास्त्र शब्द उसका अर्थ संस्कृत से आता है शिष्य। शिष्य मतलब जिसको शासन कर सकते हैं। देखिए इसका बेस देखिए, शास्त्र ये तो आपने सबने सुना है, शास्त्र शब्द आता है संस्कृत के शिष्य शब्द से, उससे रूटेड है शिष्य। हाँ, yes, that's what. और फिर शिष्य का अर्थ होता है the one on whom you can do शासन, मतलब जिसको डिसिप्लिन कर सकते हैं। शासन मतलब डिसिप्लिन। एक तरह से शास्त्र मतलब ये है जो आपको डिसिप्लिन करने के लिए बनाया गया है हम सबको, राइट? That which regulates, that which disciplines, and that's why जैसे in ordinary sense also, ये तो we are discussing about life, but ordinary day to day बहुत सारा, जैसे घड़ी है किसी का, आप अगर नया घड़ी लेते हैं तो उसके साथ आता है ना इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वॉशिंग मशीन लेते आता है, कैमरा लेते आता है, मोबाइल लेते आता है, बराबर? For everything there is a manual. तो अगर जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए मैनुअल होता है तो जीवन के लिए भी मैनुअल होगा ना, लेकिन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, पूछते ही नहीं उसके बारे में। Now we broadly will discuss 3 points here.
कि सबसे पहले what are the normal sources from which we derive guidelines in our day to day life. एक आम आदमी जिंदगी में किन चीजों से गाइडेंस लेता है. We'll discuss this first point. Second, then we'll go to then why one should turn to the scriptures for guidance. And finally, third, how can we discern or decide whether scriptures are helping us. So we may be able to cover the first thing only. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि you don't need to follow any guru. आजकल क्या है, लोगों का एक कल्चर है ही नहीं. Previously, people used to have their family guru. है आपके family guru कोई? आपके हैं? Yes. आप लोगों के हैं? लोगों को गुरु क्या है मालूम नहीं है. So previously, every family would be conducted by their family priest or family guru. लेकिन कुछ लोग अभी आजकल क्या है कि because nobody wants to lead a disciplined life, so that's why they say क्या जरूरत है, हम जैसे जिएंगे वैसे ही जिएंगे, गुरु की क्या जरूरत है, आपको जैसे जीना है वैसे जियो, ऐसा बोल के वो खुद गुरु बन जाते हैं. मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे जीना है वैसे जियो, मतलब मैं गुरु बन गया ना आपके लिए. Somewhere we are following someone. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको फॉलो नहीं कर रहे, राइट. सो अभी if you see, broadly there are 4 main categories from which we derive guidance life में. आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपके 4 चीजों पे आ जाएंगे. जीवन में हम अगर कोई बोल रहे हैं कि मैं कहीं से गाइडेंस लेता नहीं, फिर भी आप लेते हैं इन 4 चीजों से. नंबर 1, our traditions. There are traditions. हम सबके कुछ ना कुछ ट्रेडिशन से कनेक्शन है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल बताइए. आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? ओके, फोर फादर्स. ओके, तो उन्होंने क्या सिखाया? की सेवा करो, पूजा करो. हाँ, पूजा करो, हमारे सेवा उसमें नहीं है. हमारी tradition है. Respect our elders. ओके, रिस्पेक्ट द एल्डर्स. और हाँ बोलिए ना, बिल्कुल डरिए मत. Say the truth. ओके, मेरा डैड जो था ना वो ग्रंथ पढ़ता था, और वे ग्रंथ से जो भी बारी बताता था सिखाता था, तो उसमें जैसे आगे मेरा विवाह हुआ तो भगवान की मर्जी है, सबने उसकी भलाई होती है. ओके, उदास पर कितनी भी तकलीफ है उसमें भी कोई नहीं. करेक्ट. और पीछे तो बिल्कुल डरिए मत. कुछ ना कुछ परंपरा हम फॉलो करते हैं ना, बिना परंपरा के तो कुछ होता ही नहीं. क्या परंपराएं फॉलो करते हैं और हम लोग? सच बोलो. ये किसने सिखाया हमको? मम्मी ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया. यस, सच बोलो. लेकिन कभी कभी किसी के भले के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, कोई तकलीफ नहीं होती. यस यस, अपने सेल्फिशनेस. करेक्ट. और कोई काम गलत मत करो. ओके, कोई काम करो. बेसिकली मॉरलिटी, नैतिकता बोलते हैं उसको. बी मॉरल. और क्या सीखा आपने परंपरा से? डिसिप्लिन रहो. ओके, और वैल्यूज, ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली. ये मत देखो कि अरे जो अगर बच्चे घर में हैं तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट है और दूसरा कम इंटेलिजेंट है, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट उसको आप ज़्यादा प्यार करेंगे और जो कम है उसको कम प्यार करेंगे. ऐसा मत करो. स्टिक टू योर काइंड वर्ड्स. ओके, मैं मैं निकाल. बयान में दो तलवार नहीं. करेक्ट. सो इस तरह से कुछ ना कुछ परंपराएं हम लोग फॉलो करते हैं लाइफ में, राइट. एंड देयर कैन बी ट्रेडिशंस गाइडिंग अस हाउ टू वर्शिप गॉड आल्सो. अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशंस दैट दे हैव रिसीव्ड
from their ancestors, right? तो अगर कोई इंडिया में है तो इंडिया में अनेक अनेक भगवान के रूप हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, राइट? तो वो उनकी पूजा करेंगे। जो आउटसाइड इंडिया है वो बोलेगा कि जीसस इज द गॉड, कोई बोलेगा अल्लाह इज गॉड, राइट? लाइक दैट whatever we have received through our ancestors, we follow that. And इसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, we will not go into that. But traditions can be useful. At the same time, there can be some problems with tradition also. क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं traditions के साथ? Authenticity. Yes, authenticity. So then we have to verify them with the scriptures. ये बराबर है कि नहीं जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, right? And there can be some superstitions also. जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि रास्ते से अगर चलते समय पहले बिल्ली अगर रास्ता काट दे शुभ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ना, और कुछ हो गया तो आजकल लोग ऐसा होता है। तो अगर कभी भी देखा होगा आपने ऐसे, आप अगर किसी को सब्जी काटते समय चाकू देते हैं, ये चाकू हाथ में दो, हाथ में मत दो, नीचे रखो, क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और कुछ लोग को हमारे टेम्पल में हमारे ब्रह्मचारी करते हैं ऐसे, डीटी वर्शिप करते समय कैंची से वो नायलॉन का थ्रेड काटना पड़ता है, तो नीचे रखो, हाथ में मत दो। रात को बाल नहीं काटने चाहिए। हाँ, रात को बाल नहीं काटने चाहिए। हाँ, कुछ लोग बाल भी बोलते हैं, नेल्स भी बोलते हैं। पुरानी जो चीजों का होता है, जैसे तो हाथ कट जाएगा। इसके लिए कुछ रीजन होता है। Yes, yes. But all the reasons you are no longer valid. So change. शाम को दिया करने, मतलब दिया नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि आपने सुना है कभी, बोलते घर में महाभारत की फोटो नहीं लगानी चाहिए। महाभारत नहीं रखनी चाहिए। हाँ, घर में महाभारत हो जाता है बोलते हैं। वो भी नहीं रखना चाहिए। तो इसमें क्या है? तो अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। It's all good ना? लगता है खीर वाले लोग आ गए। आइए आइए, स्वागत है आपका। ऑफिस रहता है ना? It's a working day Monday, right? लेट आने के ऊपर भी कुछ है क्या? आए तो सही। देर आए दुरुस्त है। या तो लोग बोलते हैं कि महाभारत भी रखना चाहिए घर पे। महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाती है भाई। तो ये सही है कि गलत है? हाँ, आप बताइए। सही है घर में महाभारत का? ये सुना था। हाँ, देखो है ना, पढ़ते हैं तो ट्रेडिशंस सुना है। सही है कि गलत है वो हमने वेरीफाई नहीं किया। And this is what today we are here to discuss and find out whether our traditions are perfect or imperfect. संत तुकाराम महाराज आप जानते हैं सब, उनके घर में जब उनका एक लड़का नहीं सॉरी वाइफ, she passed away during the drought. He was a businessman but somehow he lost his business. You know his story. When his wife passed away, I think an elder wife, she passed away. तो अभी वैसे भी देहू गांव यहाँ से पास में ही पुणे में, तो सब लोग बोल रहे थे कि ये भगवान का भजन करने की वजह से तुम्हारे घर में ये सब कष्ट आया है।
ज्यादा ही भजन करते हो आप, यू आर डूइंग टू मच ऑफ भक्ति। लोग कभी कभी आपको बोलेंगे अरे अरे एक प्रोग्राम कर लेते हो गया होता, ये क्या है एवरी मंडे, ज्यादा ही हो गया ये, ऐसा लोग बोलेंगे। तो उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं मैं आंसर आपको रिप्लाई देना चाहिए ना। Yes. फॉर देम गोइंग टू सिनेमा एवरी वीकेंड इज नॉट टू मच, सत्संग में तो ज्यादा हो जाता है भाई। वो सत्संग क्या है, वो साल में एक ही बार करना चाहिए। हमारे मंदिर के पास में भी लोग रहते हैं, दे विजिट अवर टेंपल जस्ट वंस इन अ ईयर, मंदिर के बगल में रहते हैं ऑन जन्माष्टमी डे एनुअल विजिट। और अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब आए थे, बस दैट्स इट। दे एनुअल विजिटर्स पास में रहते हैं, दे आर नेबर्स। तो तुकाराम महाराज, उनको लोग ऐसा बोलने लगे। तो तुकाराम महाराज सेड वेरी नाइसली, बोले कि देखो आप कहते हैं कि मैंने भगवान का भजन किया जाता है इसलिए मेरे घर में सब कष्ट है, भगवान का नाम लेता है इसलिए। अच्छा, पूरे गांव में जाओ और ऐसा एक भी घर मुझे ढूंढ के दिखाओ जिस घर में लोग भगवान का नाम नहीं लेते और उस घर में आज तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। तो मिलेगा क्या आपको ऐसा घर? नहीं मिलेगा ना। तो भगवान के भजन से कुछ कनेक्शन नहीं है उसका। लोग अपने अपने कर्म से जन्म लेते हैं, अपने अपने कर्म अच्छे बुरे बनाते हैं, उसके हिसाब से फल प्राप्त करते हैं। भगवान केवल उनको फल देते हैं या लेते हैं बेस्ड ऑन अवर यस। उसी प्रकार घर में जब आप महाभारत की फोटो लगाएंगे तो ऐसे कितने घर हैं जिस घर में महाभारत की फोटो नहीं लगी और उस घर में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि उनको नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। है कोई ऐसा घर जिस घर में महाभारत की फोटो नहीं है और पूरी शांति है? तो फिर हम इस कंक्लूजन पे कैसे आ सकते हैं कि जिस घर में महाभारत लगाई है वहां महाभारत होती है? हाउ कैन वी कम टू दैट कंक्लूजन? और बाय द वे, महाभारत के फोटो के ऊपर जो ये फोटो रहता है इसमें कौन है? भगवान है, राइट? जहां भगवान है वहां तो पूरा ऑस्पिशियसनेस और पॉजिटिविटी रहती है। Then how can we come to the conclusion that there is negativity? And of course, then you may say कि जिस घर में फोटो है वहां भी झगड़े होते हैं, but still there is some positive factor we may not know, you know. And भगवान कैसे हैं? भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मुझे प्रेम से एक पत्ता, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा एक फल, या फिर आप अगर मेरा नाम लोगे तो उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा 56 भोग का प्लेट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर लव दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सिंपल थिंग्स, राइट? सो दिस इज फर्स्ट थिंग। ट्रेडिशंस अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन अंधश्रद्धा भी हो सकती है। उसके साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ऑथेंटिक ना हो, अंधश्रद्धा हो। और कभी कभी लोग बोलेंगे तो पुराने जमाने के लोग हैं यार, कहाँ है सब अगरबत्ती घुमा रहे हो घर में, धुआं धुआं होता है मम्मी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ज्यादा, आंखें खराब हो रही है मेरी, सांस फूल जाती है, इतना बड़ा अगरबत्ती लगा के रख देते हैं आप लोग। Yeah, I agree. It's not that devotion के नाम पे आप कुछ भी करोगे तो वो जायज है, but at the same time there are ways to express. These are all ways to express our devotion to the God. अगरबत्ती नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको बोला है कि इतना लंबा अगरबत्ती मतलब छोटा तो लगा सकते हैं, राइट? आपने तो पीके मूवी देखा भी होगा ना? देखा है पीके मूवी? तो उसमें तो वही बोलते हैं कि इतना सारा पैसा समय क्यों भगवान को दिया जाए, उतना गरीबों को दो।
बट ये लोग नहीं जानते कि the person is poor not because of lack of food or shelter. Person is poor because of lack of love. And unless there is love inside heart, you will always remain poor, despite having so many things in life. प्रेम नहीं रहेगा तो कितना भी बड़ा वैभव बने तो वो गरीबी है, राइट? इसलिए भगवान को अगर हम कुछ अर्पित करते हैं तो वो उससे हम अपने ही अनर्थों को दूर करते हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी। जितना वो साफ होगा उतने हम अच्छा प्रेम कर सकेंगे लोगों से, खुद से, राइट? Today we are not able to love each other because our heart is full of dirt. That we want to love ourselves, but that just loving yourself doesn't satisfy you alone. You have to love others also. Then you can love yourself. But कब होगा जब heart साफ होगा, right? So this is the thing. People say this is old-fashioned. Right? So this is first thing, traditions. Are you all with me? Yes. Say Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो ये हो गया पहला चीज, ट्रेडिशन, जिससे हम लोग गाइडेंस लेते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सेकंड थिंग इज कल्चर। सेकंड थिंग इज कल्चर। आप बोलेंगे कल्चर से कैसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं? कल्चर हैज अ मेजर इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। अभी आज देखिए ना, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो कितने लोग भगवान के भक्त बन गए होंगे, जरा सोचिए आप लोग। हाउ मेनी पीपल स्टार्टेड चैंटिंग नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, हाउ मेनी स्टार्टेड बिलीविंग इन लॉर्ड राम, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जस्ट बिकॉज अ कल्चर इज क्रिएटेड टू वर्शिप लॉर्ड, राइट? ये तो स्पिरिचुअल कल्चर है, बट इफ यू सी इन द सिटी लाइक मुंबई और एनी अदर मेट्रो सिटी और इन द मॉडर्न टाइम्स वेयर देयर इज ए इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यू नो, वहाँ पे आप देखेंगे कि कल्चर doesn't always is correct to follow. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी, अच्छा आप लोग पंजाबी ड्रेस क्यों पहनते हैं? पंजाबी है इसलिए। हाँ, फिर साड़ी क्यों नहीं पहनते? कंफर्ट इज वन थिंग डेफिनेटली, यस, बट अगर कल को सब लोग साड़ी पहनना चालू कर दिए तो देखना आप, देयर विल बी इनडायरेक्ट अनकॉन्शियस चेंज। अभी इंडिया में आज सब लोग, ये आप कुछ कहना चाहते, बोलिए ना। And what is the reason for that? कुछ लॉजिक नहीं, कुछ इंटेलिजेंस नहीं, कुछ नहीं। See, then this is not going to help, right? This is just blind following. Why? Because सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। So culture also sometimes may not be a perfect, guiding parameter to follow in life. जैसे कभी-कभी आप लोग, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कि एक नया मॉडल आया है जूतों का, शूज का, लोग खरीदते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में 100, 200 डजन जूते रहते हैं। आपके घर में कितने हैं? पैर तो दो ही है ना पहनने के लिए, राइट? बट पीपल कीप ऑन, ऑफ कोर्स it's your free will, you can have, but we are discussing that, इस तरह से our mind is influenced by culture around us to go in a particular direction that may be correct, may not be correct. ये हो गया दो चीजें हो गई।
राइट? Are you all with me? Yes. पहला हमने क्या डिस्कस किया था? Tradition. ट्रेडिशंस. सेकंड Culture. कल्चर. कल्चर के साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम है. कल्चर समटाइम इज क्रिएटेड बाय few people to exploit. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हिस्ट्री का. आपने ये सुना होगा सफरजेट मूवमेंट. सुना है? वुमेन्स लिबरेशन सुना है? आप संख्या ज्यादा है यहाँ पे माताओं की, इसलिए ये दिस इज ए फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका 1930 आई थिंक या 1930 जब सिगरेट का इन्वेंशन हुआ था. सिगरेट मतलब उसके पहले ही हो गया था. कुकिंग चालू हो गया. Maybe until yeah. It's okay. Cooking? Sorry? Cooking हो रहा है. No, somebody was at the door. So 1930 के पहले सिगरेट का इन्वेंशन होके काफी समय हो गया था. बहुत सारे लोग सिगरेट पीना चालू किए थे. That time मार्केट सैचुरेट हो गया. So they did some research and they found out that only men are smoking, women are not smoking. तो उन्होंने देखा कि यार 50% मार्केट तो भी टैप ही नहीं हुआ है. आप लोग पीना बता. And not advertising. तो बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं. उन्होंने देखा कि यार ये लोग आधे लोग तो उन्होंने क्या किया, अभी एडवर्टाइज करने का भी तरीका रहता है. जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे रहता है, जो भी जैसे हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम उन्होंने जो परेड होती है उस परेड में कुछ लेडीज लोग हायर किए हॉलीवुड से. उनको बोला कि आप पियो, पब्लिक में पियो और उसका बड़ा एडवर्टाइज करो. They gave good amount of money. They did that advertisement. After that, उसी टाइम में ये आपने कभी सुना है कि नहीं पता नहीं मुझे, सफरजेट मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन वाज टेकिंग अप. वुमेन्स लिबरेशंस, where women's and men actually शास्त्रीय के लिए देखा जाए तो we never say that कि स्त्री कम है और पुरुष बड़ा. ऐसा कभी शास्त्रों में तो ये लिखा नहीं है. शास्त्रों में दोनों को समान स्तर दिए गए हैं, but they have their different roles and responsibilities based on their psychophysical nature, right? प्रॉपर तो हमेशा कहते हैं कि man cannot become pregnant, is that right? Woman can become pregnant, so biologically difference है. So how can they become equal? There is equality, but at the same time nature has arrangement and different types of functions to perform by both the yeah. But लोग क्या कहते हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए, लड़कियों को भी वही अधिकार हो जो लड़कों को अधिकार है. तो दिया ना अधिकार, हम क्या मना कर रहे हैं? आज सबको अधिकार समान है, बट यू कैन सी द सिचुएशन. लोग कहते हैं कि हम लोग खाली घर में बर्तन धोएंगे क्या? लोग भी ऑफिस में जाएंगे, जाओ ना, हमने क्या मना किया, राइट? बट yeah, spiritual circle में तो definitely there is no discrimination. But as far as our bodily functions are concerned, we are totally different. What function a man can do, women cannot do, right? बच्चे को बड़ा करने का काम पिता अकेले नहीं कर सकता. The child needs the love of mother because that's a different kind of affection she can give, which a man cannot give. He can give, but he cannot give. It's a different thing. Those who are mothers, they can relate to it, and fathers, they also can relate. Right? तो ये moment पकड़ रहा था, पिकअप हो रहा था इसका. At that time, ये लोगों ने कहा कि वे एडवर्टाइज करेंगे, और आफ्टर दैट उनको जब पूछा गया कि आप लोग इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सिगरेट का,
तो उन्होंने कहा कि वी आर लाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम का टॉर्च है। एंड आफ्टर दैट now you know the situation today, there are billions and billions of men are already doing that, but women are there also, in the trap of this addiction of smoking. ये कैसे हुआ? Just because of advertisement, and they created a culture of अरे सिगरेट पीना मतलब कूल। प्रभुपाद कहते हैं कि सिगरेट पीने से कूल थोड़ी होता है कोई। You're inhaling fire inside. How can I become cool? ऐसा होता है कभी लोग बोलते हैं। अभी आपके जो बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हैं वो लोग ऐड करते हैं ना, गुटखा खाइए, वो खुद नहीं खाएंगे, आपको बोलेंगे खाओ। तो कभी आपने पूछा जाके उनको जो ये सब ऐड करते हैं, आप लोग ये सब लेते हैं, they never take because they know इसका क्या harmful effects है, but people are so foolish, they just go by propaganda, and that's how they are cheated. So that's why culture is also sometimes not perfect to follow. It's two things. Then third one, then can we depend on our mind? तो अभी हमने we are going deeper inside. First is our traditions. वो तो पुराने चीजें हो गई. Culture is present. Past को follow करते हैं कुछ लोग present को follow करते हैं. Now let's see our own system. तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मेरे मन के हिसाब से काम करता हूँ भाई, मुझे कल्चर से लेना देना नहीं है, मुझे ट्रेडिशन से लेना देना है, मैं अपने मन से काम करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं करता, है ना। ऐसे कुछ भी लोग बोलते हैं ना आपको, मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। बट ये सही है क्या? हाँ, जो मन को हमेशा अच्छा लगे वही अगर आप करेंगे तो सही है क्या? जैसे आपके बच्चे भी है ना, पढ़ाई कर रहे हैं अंदर है ना, वो बोलेंगे दिन भर हम खेलेंगे, चलेगा क्या? छोटा बच्चा दिन भर खेलना ही चाहता है, नहीं चलेगा ना। He has to be disciplined, right? So अब क्या होता है कि there are some people, they are grown up biologically but psychologically they are child only, है ऐसा कोई देखा? शरीर से बढ़ जाते हैं, मन से कभी बढ़ते नहीं, क्योंकि मन को कभी डिसिप्लिन किया ही नहीं है। बोलेगा आज मूड है चैंटिंग करने का, आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं? Are you chanting? Yes. I have given you beats, सबको मिला है, कर रहे हैं आप लोग चैंटिंग? Yes. Raise your hands those who are chanting. Okay, not to worry. आज सब चैंटिंग करेंगे हम लोग एक राउंड, and then we'll also do it regularly. तो कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है ऑफिस जाने का तो मैं ऑफिस जाता हूँ, आज मन नहीं कर रहा है नहीं जाऊँगा, ऐसा होता है क्या? होता है क्या ऐसा? ऐसा होगा तो फिर जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। आज मेरा मूड कर रहा है खाना बनाने का तो बना लेते हैं, प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम नहीं है, नहीं चलेगा ना, बनाना पड़ता है ना। So you can't depend on your mood swings. मन का मूड है आज तो घूमने चले जाते हैं, नहीं चलेगा ना, अभी टाइम भी देखना पड़ेगा, क्या क्या सर्विसेज देखना पड़ेगा। So we can't rely on mind, and mind ऐसा है कि हमको कुछ चीज आप बोलते हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन आप कर जाते हैं, उसके बाद मन बोलता है कि क्यों किया है तुम्हें ये? It will beat you both the ways. पहले बोलता है ये करने का नहीं, फिर बोलते हैं नहीं कर ले, थोड़ा सा घूम ले, खा ले, पी ले, फिर उसे क्यों खाए? समझ में नहीं आता, डायबिटीज है, अकल नहीं है इतना भी, and that's how it keeps you tossing up and down in the existence of the material world. So that's why we can't rely on the mind also. Then the fourth thing, then can we rely on intelligence? Intelligence मतलब हमारा बुद्धि। अब वो बुद्धि आपने कहाँ से लिया है? Tradition, culture and हाँ,
सब जगह से लिया है और आपका खुद का भी कुछ रहेगा, कंकोक्शन जो भी रहेगा. With intelligence we can come to a good sense. It is called common sense. ये सही है, ये गलत है. It makes sense, it doesn't make sense, right? But you have to see whether that sense which you are deriving is coming from the proper source or not. And information sometimes can be partially correct. जैसे एग्जाम्पल, एक अगर हार्ट पेशेंट है, राइट? आप में से डॉक्टर कोई है? कोई नहीं डॉक्टर. अगर हार्ट पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और बोलता है डॉक्टर बहुत तकलीफ हो रहा है हार्ट में, दवाई दो. डॉक्टर दवाई देता है. फिर हार्ट पेशेंट बोलता है कि ये दवाई लेने से मेरा और बीमारी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको डायबिटिक भी था. उसने बताया नहीं डॉक्टर को भी डायबिटीज भी हो, तो उसने ऐसा दवाई दिया है जो हार्ट के लिए यूजफुल है बट डायबिटिक के लिए खतरनाक है. तो उसका इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास जो आया वो क्या है? इज नॉट यूजफुल, राइट? इफ इट इज नॉट कंप्लीट. So that time he may give the perfect prescription based on his intelligence, but that prescription will only act against him because he doesn't know the whole picture, right? So sometimes intelligence that is based on imperfect knowledge or partial knowledge can also lead to disaster, right? So that's why we can't rely on our intelligence also. That's what. Now we have to come back to our first point, corrective equation, right? आज तक तो equation हम लोग इसी से derive कर रहे हैं ना, based on our traditions. कहते हैं कि मेरे परंपरा में तो ऐसा है, या फिर मेरे अराउंड कल्चर ऐसा है, या मेरे मन को अच्छा लगता तो मैं करता हूँ, या फिर जो भी मुझे बुद्धि मिली है अब जगह से जमा करके उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ. तो ये सारी चार चीजें अच्छी भी हैं लेकिन फेल भी हो जाती है लाइफ में कई बार. And that's why we need scriptures. अभी स्क्रिप्चर क्यों चाहिए हमको? शास्त्र से क्यों जानकारी लेना चाहिए हमको? Why we have to take knowledge from only scriptures? Why? Because there are 4 principal defects in each and every conditioned soul. उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे इसको. Then we come to the a solid reasoning that why I need to base my life, take guidance from scriptures. See, ये सब कभी-कभी आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत elementary है, but we need to know this, otherwise we will not have. See, because भगवद गीता या कोई भी scripture आपको पढ़ना है तो you have to take shelter of this for life, not just for 1 day, 2 day, 3 day. So you need solid reasoning. Why I need this? तो 4 principal defects जो रहते हैं, आप अभी देखेंगे आपके अंदर, हम सबके अंदर है. Because of that, you can never give perfect guidance to anyone. आप लोग बोलेंगे मैं तो बिजनेस में गाइडेंस देता हूँ भाई, एक डॉक्टर पेशेंट को गाइडेंस देता है, एक टीचर स्टूडेंट को गाइडेंस देता है, इतने सारे मार्केट में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइफ कोच हैं, फलाने दुनिया भरा हुआ है, गाइडेंस दे रहे लोग सुबह से लेकर शाम तक. तो उनका गाइडेंस परफेक्ट नहीं है? नहीं है. अगर परफेक्ट होता, so they will at the end of the day they would not come with a question, I am not happy in life. ये क्वेश्चन आता ही नहीं ना इंसान के पास, लेकिन ये क्वेश्चन है because our guidance is not perfect. So let us see 4 कौन से दोष हैं. सबसे पहले उसको शास्त्रिक भाषा में कहते हैं कारणा अपार्ट. नंबर 1, कारणा अपार्ट मतलब our senses are imperfect. Number 1, our senses are imperfect. Now can you give me example of this? Our senses are imperfect. Our senses मतलब समझ में आता है ना आपको? Eyes, ear, nose, touch, and tongue. These are called knowledge acquiring senses, right? These senses are not perfect to gather knowledge. जैसे for example बताइए, come on pick. You might hear good fight. हाँ. You know who's right, who's wrong. Yes. Based on this fight. You can't. हाँ yes. ये खीरा है क्या?
अच्छा Prasadam is one thing that unites everyone and excites everyone. That's keep you connected and go on. Few minutes, 10-15 minutes, then we're done. So, yeah, आपने एक उदाहरण दिया और I'll give one more example. Suppose, every day you see moon, right? Yes. आप देखते हैं ना? तो आपको कितना बड़ा दिखता है मून? कैसे लगता साइज कितना दिखता है? है? कितना सा? मून उतना ही है क्या? आपको कैसे पता? बड़ा है साइज. Yes, that means you don't depend on your own intelligence to come to some conclusions. You base your decisions through your, research or whatever you have heard, some reference. Common life में आप ऐसा करते हैं, but when it comes to spirituality, हम बोलते हैं जरूरी नहीं है, when it comes to God, when it comes to dharma, लोग बोलते हैं जरूरी नहीं है, हम जो पता है हमको पता है, वो परफेक्ट है हमको पता है. कैसे पता आपको परफेक्ट है कि नहीं हो? हाँ या yes फैन है बोलते हैं हाथ वो स्टोरी है आपको पता ही है उसको. So that means our senses are not perfect. इसका एक एग्जांपल आपको सुंदर देता हूँ. Yeah, this is okay. ये इतना काफी एग्जांपल परफेक्ट imperfect senses के लिए. And accordingly there are many other senses which are imperfect. You can take examples on your own later. ये हो गया पहला चीज. दूसरा चीज होता है प्रमाद. प्रमाद means to be under illusion. To be under illusion. कैसे आपको बताता हूँ मैं. एक तो हो गया हमारे सेंसेस क्या है? Imperfect है. Second thing, imperfect senses के होने के बाद भी अभी पूरा नहीं हुआ स्टोरी. Second thing, we are always under illusion. Say for example, I am seeing you, you are seeing me. What do you see? That this is Tarun Gaurang Das. I see Ashish Gupta Prabhu. I can't see you as a spirit soul, which is your original identity. जो हम भगवद गीता में स्टडी करेंगे. ये तो ज़्यादा ही हाई एग्जाम्पल हो गया. एकदम बेसिक लेते हैं. जैसे illusion is something that happens subconsciously which you cannot avoid. Say for example, if I come from cold place and put my hand in warm water, it will appear to me as, if I listen properly, if I come from cold place, you may try this later, and put my hand in warm water, पानी कैसा लगेगा आपको? गरम लगेगा. गरम लगेगा ना, राइट? देखिए वार्म वाटर एंड हॉट वाटर में फर्क होता है. वार्म इज नॉर्मल वार्म, बट आपको पानी कैसा लगता हो? हॉट लगता है. मतलब ये क्या है? हाँ, मतलब ये क्या है? मिस्टेक है ना. इट्स नॉट हॉट, इट्स नॉर्मल वार्म. बट आपको ऐसे लगेगा. Why? Because ये सेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि आप उस समय आपका इंटेलिजेंस उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि ठंडा है गर्म है, क्योंकि आप उस जगह से आए हैं. है ना. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इसको और सिंपलीफाई करते हैं. जैसे आप लोग एसी रूम से बाहर निकलते हैं तो कैसा लगता है आपको? लगता है गर्म है बहुत. और जो आदमी बाहर बैठा हुआ है नॉर्मल है यार, ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर. जैसे आप लोग जगन्नाथपुरी गया था मैं लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मे. आई थिंक 12 बजे रहेगा दोपहर का. फ्लाइट से जैसे नीचे उतरा, इट वाज 45 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड. ऐसा लगा कि डायरेक्ट यहाँ से अंदर हीट वेव्स. लेकिन बाहर लोग बैठे होते आराम से, कपड़ा डाल के बैठे होते. वी आर यूज्ड टू दिस.
But for me it was ऐसा लग रहा था कि अभी मर जाऊंगा मैं. But it was not like that. Why? Because बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है हमारा, परफेक्टली उसको कोई भी चीज सेंस करने का टाइम लगता है. And sometimes you may not sense also. Like this example. So this is called pramad or illusion which you cannot avoid. You know? And then उसके बाद third thing, कितने कितने बताए मैंने? पहली चीज Senses are imperfect. senses are imperfect. Second, we are under illusion. Third thing, because we are always under illusion, we commit mistake. We commit mistakes. Like for example, अगर हम नोट काउंटिंग कर रहे हैं, 100 का नोट 100 है, लेकिन काउंटिंग करते करते क्या होता है, अगर मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो 99 आता है, फिर काउंटिंग करता हूँ 99 ही आ रहा है, मशीन में डालते तो 100 दिखाता है. वो है कैसे? अब आपको कभी ऐसा. That means mistakes are something which can be corrected by conscious observation. थोड़े कठिन शब्द है, लेकिन these are what the fundamentals of our further studies. ठीक से मैं काउंटिंग करूँगा तो मेरा 100 आ जाएगा, right? So that means mistakes can be corrected, but इसके पहले जो example दिया illusion का, that cannot be corrected because that happens subconsciously, right? तो 3 हो गए. और अभी क्या होता है? सबसे पहले senses are imperfect because of which we are always under illusion. Because we are always under illusion, we commit mistakes. तो कल ये मत बोलना घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो अरे we are always under illusion. So we are supposed to commit mistakes. That is there, right? And to cover mistakes, what we do? We cheat. We cheat others, right? इसका एक example आपको बताता हूँ, classic example. Anyone here devotee of Darwin? Follower of Darwin? Darwin नहीं मालूम आपको? Darwin's theory. नहीं पढ़ा आपने Darwin's theory? Darwin's theory. बच गए आप? हाँ, अच्छा है, भूल गए आप. आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे. डार्विन कहते हैं, हाँ? Yeah, Newton was a celibate, you know. Newton was a celibate, and he said कि मेरे जितने भी मैं equations बनाता हूँ, they have no meaning if they don't glorify God. He was a celibate monk, Newton. Yeah, very pious person. But our Darwin, he was not. He said, first of all, see इसके step by step देखिए आप इस example को. आप लोग थके तो नहीं ना? नहीं. आप थक गए? नहीं. ओके. सबसे पहला क्या था? Imperfect senses. तो डार्विन ने क्या किया? Because of imperfect senses, he said there is no God. Simply because our senses cannot perceive God doesn't mean God doesn't exist. Just like you see the moon appears to be very small to our senses, but moon is not small. Moon is, and for that you refer your geography books or astronomy books, right? Similarly, how can you decide whether God exists or not exists without referring standard scriptures, isn't it? That we will discuss later more. He said there is no God, right? Now there are many things to discuss in connected to this point. How God exists, how God is there. बिना भगवान के तो कुछ होता ही नहीं है. ये संसार चलेगा ही नहीं बिना भगवान के, right? इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए, तो you know sometimes there are many things in our life which we can control, and there are many things which we can't control. बराबर है कि नहीं? जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था,
रात में कितने लोगों को नींद आने में कभी भी तकलीफ होती है? कितने लोग होती है? नींद नहीं आता है, बेड पे पड़े रहते हैं। उस समय ये याद नहीं आता है कि आई एम नॉट द कंट्रोलर। बाकी टाइम जीवन भर बोलते हैं आई एम द कंट्रोलर, वेयर इज गॉड, आई कंट्रोल एवरीथिंग इन माय लाइफ। बट अपनी नींद कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कंट्रोल है तो फिर सो के दिखाओ ना, you have the power to control everything. This is just one example. पूरा जीवन देखेंगे तो whole life is controlled only. Our whole life is now we are under control of time, isn't it? Everything is controlled. So how can you say that you are without control? And अभी control है तो कोई तो control चाहिए ना? If there is control, then there is someone who is controlling us. That's what we have to discover and study. Of course, this is a later part, but first thing, Darwin ने कहा कि because of his imperfections, he could come to proper conclusion. भगवान नहीं। Then, under illusion, when he was traveling, एक यात्रा कर रहे थे वो समंदर की। उस यात्रा में उन्होंने देखा कि बहुत सारे बंदर जो हैं, उन्होंने देखे बोले बंदर ऐसे ऐसे करते हैं, आदमी भी ऐसे ऐसे करता है, बराबर? बंदर ऐसे करता है, आदमी भी ऐसे करता है, बंदर ऐसे हाथ से खाता है, आदमी भी ऐसे हाथ से खाता है। So because of that, उन्होंने कहा, see this is a mistake, huh? Sorry, this is an illusion. He said that there are remarkable similarities between men and monkeys. बराबर? इस conclusion, under illusion he thought like that. And now he committed mistake of concluding that humans they come from monkeys. बराबर? ऐसा हुआ है कभी? बंदर से आदमी आया है तो आज क्यों नहीं आ रहा है? अगर डार्विन कहते कि पहले बंदर से आदमी आया तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? और हमारे जो एंसेस्टर अगर ट्रेस आउट करेंगे, हमें तो नहीं दिखता कोई बंदर है करके, एंसेस्टर कोई है क्या? राइट? बट उसने कंक्लूजन दे दिया है और इसको कवर करने के लिए उसने बोला कि देयर आर सम फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड देयर इज सम कनेक्टिंग लिंक, वो आज तक मिला नहीं। राइट? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ दिस फोर things which follow in series. Because of imperfect senses, we are always under illusion. Because of illusion, we commit mistakes. Because of mistakes, अभी mistake कोई बोलेगा ना, मैंने mistake किया है, they want to cover it, so they cheat. ऐसा नहीं था, वो ऐसे था. And therefore, in the scientific field, there are two things: facts and theories. The things which support their mistakes, they call it as a fact, and things which doesn't support their mistakes, they call it as theories. समझे कि नहीं? ज़्यादा हो गया। प्रोसेसर खराब हो गया। Yeah, we are done. We are done with this. But this is required. See, otherwise, what happens if you do not study scriptures scientifically? It will become andhashraddha. We need to know things. See, there are two things: head and heart. With heart comes faith, right? With heart comes faith, and with head comes reasoning. If your devotion to God or your bhakti or spirituality is just based on bhav and no reasoning, then if you encounter anyone who asks for reasoning, then that time you will end up in trouble. And that's why we need the proper reasoning as to why I am following this and why you also need to follow. Okay. Yes, yes. भाव के साथ मानती थी भगवान को, लेकिन मैं सोच के प्रूफ चाहिए, मैं ऐसे नहीं बिलीव कर सकती। मदर-इन-लॉ, आपकी मदर-इन-लॉ। मदर-इन-लॉ, just faith था, वो just के साथ एक अंदर से उसका एक सच्चा प्यार
रीजन ढूंढते हैं। या रीजन हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि आजकल जमाना वैसा है। अगर आप सड़क में जाएंगे तो आपको लोग पूछेंगे कि आप यही जूते क्यों पहन रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगता है। बट इफ यू टेक बीड बैग एंड स्टार्ट चैंटिंग, लोग आपको उससे 50 सवाल ज़्यादा पूछेंगे, क्यों चैंटिंग कर रहे हो भाई? Then you need the reasonings to give them, right? बराबर ना? नहीं देंगे तो आप बोलेंगे यार फिर क्यों कर रहा हूँ मैं भी, बंद कर दो कल से, right? And that's why ये elementary जो discussions हम बेसिक हम कर रहे हैं वो जरूरी है, right? So I'm done. So basically we discussed 4 plus 4 8 things today. आप डायरी बाद में रेफर कर लीजिएगा। पहले हमने 4 things. What are the 4 things based on which we take decisions in life? कौन सी चीजें हैं? Traditions, culture, mind, intelligence. All of them can be good, but may not be perfect. And many of the times may be completely imperfect. और कल्चर के ऊपर तो बिल्कुल मत जाना। अगर कल्चर वो सिगरेट वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, ऐसा रहेगा तो। And even if अभी जैसे राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है, लोग फॉलो कर रहे हैं, people like it, but people need some scriptural basis to understand why I am doing what I am doing. Otherwise, कल को जाके क्या होता है आपके घर में, अगर समझो आप भगवान को अगरबत्ती दिखाते, दिया दिखाते हैं, बच्चे कल आपको पूछते हैं आप क्यों दिखाते हैं दिया, तो आप बोलते हैं मेरे मम्मी ने दिखाया था, पापा ने दिखाया था। तो अगर आप आपके पापा मम्मी को पूछेंगे, बोलेंगे आप क्यों करते हैं, नहीं मेरे पापा मम्मी ने किया था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आजकल के बच्चे they want solid answers. If you don't give them proper answers, पीके बन जाएंगे वो लोग। And that's how the whole modern civilization is becoming atheistic. This is the main reason. इसलिए प्रभुपाद कहते कई बार कि many temples in India, why they are vacant now? क्योंकि टेंपल में जो लोग हैं आज, बहुत सारे मंदिर बड़े बड़े, they don't educate people. You need to educate. Temple मतलब क्या है? It's a university to educate you about God and life. If you just go and visit, that's good. But more than that, you need a proper understanding as to why I should visit and what is the way and consciousness in which I should visit the temple. अभी आजकल लोग टेंपल में क्यों जाते हैं? और खास करके कब जाते हैं? जब कुछ दुख आता है, तकलीफ आती है, बराबर ना? Ordinary people don't visit. आज हम लोग प्रोग्राम में बैठे हैं यहाँ पे, क्यों बैठे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुखी हैं इसलिए, because the culture is created based on what कि ये जरूरी है, right? और जिन लोगों को लगता है कि ये जरूरी है वो लोग आते हैं। और स्कूल में स्पिरिचुअल नॉलेज इतना नहीं मिलता है, इतना मिलता ही नहीं है। स्कूल में खाली आपको सिखाते हैं how to earn your livelihood, that's it. But with that livelihood, how you should, live. देखो दो चीजें होती हैं, कमाना और कमा के जिंदगी जीना दो अलग अलग चीजें हैं। कमा तो सब लेते हैं, लेकिन उसके साथ कैसे जीना है वो कौन सिखाएगा? And that's why equation ही गलत है पहले से। And that's why people are, not getting what they are expecting कि मुझे ये मिलेगा जीवन में। लोग सोचते हैं कि चलो भाई आज मेरी नौकरी ना, स्कूल में उनको लगता है बड़ा हो जाऊंगा तो मजा आएगा। और छोटे बच्चे होते हैं उनका हाफ पैंट रहता है स्कूल का, उनको लगता है फुल पैंट हो जाएगा तो मजा आएगा। फुल पैंट भी हो जाता है, लगता है कि नहीं फुल पैंट होने के बाद अभी कॉलेज में वो बड़े बड़े हमारे सीनियर्स लोग घूमते हैं वैसा, इधर तभी भी नहीं होता। उनको लगता है नौकरी मिलेगा तो जाएगा। और लगता है यार शादी होने के बाद होगा, लगता है शादी होने के बाद भी होता है ना। तो जिसकी शादी होगी बोलते बच्चे होने के बाद हो जाएगा। That's how life keeps on dragging until the end। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ जिंदगी में यार। So it's an unending struggle and a competition to get happiness. But if we base our life on Bhagavad Gita, then धीरे धीरे स्टार्ट होगा समझना और ओपन होना। That's all। तो ये 4 चीजें। एंड 5th हमारा गाइडेंस आता है शास्त्र से, स्क्रिप्चर से।
और शास्त्र से गाइडेंस क्यों लेने का? बिकॉज शास्त्र और स्क्रिप्चर्स दे आर बियॉन्ड दिस 4 डिफेक्ट्स, बिकॉज दे आर गिवन बाय गॉड. गॉड इज, शास्त्र में उसको कहते हैं अपौरुषेय. अपौरुषेय मीन्स हु इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग इज प्रोन टू कमिट दिस 4 मिस्टेक्स. कौन से हैं? Imperfect senses, they are always under illusion, because of which they commit mistakes, and to cover up mistakes they do cheating. तो भगवान के अंदर ये 4 दोष नहीं है, इसीलिए भगवान परफेक्ट ज्ञान दे सकते हैं हमको, right? And that's why we should refer शास्त्र. Now, अब आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा. Because now you know कि मुझे क्यों जरूरी है पढ़ना. इसलिए नहीं कि मेरे दादा और अंकल आंटी मामा पढ़ते थे इसलिए मैं भी पढ़ूंगा, नहीं. इसलिए नहीं कि अरे अभी देश में स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रहा है भारत में, तो now I am forced to go to temple. If I don't go to temple, जैसे अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है वो टेंपल में जाते हैं, पहले भगवान को नहीं मानते थे. They are forced to go to temple now. यार भाई टेंपल में तो वोट नहीं मिलेगा हमको. तो हमारा भी ऐसा नहीं है कि अभी स्पिरिचुअलिटी भारत में बढ़ रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा यार. नहीं गया तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है यार, मंदिर में जाता है. देखो मुस्लिम्स फ्राइडे को चाहे कुछ भी हो नियम है, क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च जाएंगे, लेकिन हिंदू में वो नियम नहीं है. जो कोई चीजें यस, तो ये नियम हमको बनाना है, वो बनाना है, वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. That's what we are also going to discuss. That's what will come in the course ahead. That's why I said we can't skip this. Otherwise आपको पहले से क्लियर नहीं है तो आगे जाके आप कैसे गीता पढ़ेंगे? That will come up. Right. Thank you so much. Hare Krishna. So you have any questions? Quickly, if you have. If you don't have, then we have Kirtan. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Do you want to ask something? तो next time मैं आऊँगा तो recap करूँगा. आप लोग इसको रिवीजन करके आइए. जब नोट्स आपने बनाया होगा, just post on the group. Basically 4+4 things. And previous class के 5 things. Okay. Hare Krishna. 5 seconds. 5 seconds. Yeah. So we have now Kirtan. Hare Krishna. This is the most important part of our program, right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna